बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जागते रहो और अब आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसने गलवान पर चीन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है वो बताते हैं। गलवान पर चीन अपने सैनिकों की मौत को हमेशा छिपाता रहा है। आज तक चीन ने दुनिया को यह नहीं बताया कि आखिर उसके कितने सैनिक गलवान में मारे गए थे, लेकिन अब इस पर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने किया है खुलासा। क्या खुलासा किया है ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन का खुलासा है। गलवान डिकोडेड के नाम से रिपोर्ट छपी है जिसमें खुलासा किया है कि साल 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। गलवान में नुकसान पर चीन ने झूठ बोला। गलवान में चीन को भारी नुकसान हुआ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई जवान नदी में बह गए। हिंसक झड़प के दौरान चीन ने 38 सैनिक खोए हैं। 38 सैनिक नदी में बह गए। चीन ने छिपाई अपने सैनिकों की मौत की खबर। चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी, लेकिन अब इस ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने ये झूठ बेनकाब कर दिया है, इसका पर्दाफाश कर दिया है। गलवान में पहाड़ से गिरकर कम से कम चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे। यह खुलासा ऑस्ट्रेलिया के अखबार द कलेक्शन ने किया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता राहुल गौतम ने द कलेक्शन के संपादक एंथनी क्लान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। News website has filed a very startling and a very eye-opening detail of what happened on June 15th between Indian and Chinese soldiers. The person who comes from the same fraternity as I belong to, Mr. Anthony Klan, who is one of the finest investigative journalists of Australia, he is the one who has filed that report that stirred Indian politics for a moment. Thank you, Mr. Klan, for joining us. Thank you for having me. Mr. Klan, if you just tell us what really happened on June 15, because you have quoted one Weibo user, who claimed that he served in that particular area in Galwan Valley, and it was actually Chinese side who first violated the agreement between the two sides. What actually occurred that evening has been quite a mystery, which is quite remarkable given it's a clash between the world's two biggest nations, and then there were quite a few casualties, and then the international spotlight was on it. So now it's emerged that there were apparently many more casualties on the Chinese side than has been admitted to by Beijing, and it's around 38, our sources say, and that's from people. Reports at the time in China. What gives particular weight to these claims is that they were targeted for deletion. They were deleted by the Chinese authorities, but China's gone out of its way to sort of or to ban or remove any reference to casualties in particular. This Chinese government and its the Chinese state media's reporting, which was basically non-existent. So we didn't see there's almost zero reporting of this clash. So you put those together, and it makes it sheds quite a bit more light. But going further than that, so we've established that there were in fact 2 confrontations that have been conflated by some sections of the Chinese state media. There was a confrontation on June 6, which was just over a week before the deadly clash. So that's come about from our sources, and it's all stacking up, or is stacking up very solidly, is that we have the dispute has come down to, the final dispute has come down to the installation of a temporary bridge by Indian authorities. Now, the June 6 clash was with respect to this. It was settled, or there was an agreement reached rather, between the two officials of the two competing sides, and that was that each would remove any infrastructure from the buffer zone. Now, what's occurred is that, and India's side has been, well, there was China didn't remove its infrastructure and instead actually removed this temporary bridge. Now, this temporary bridge was there. It was over a stream of the Galwan River, and it was there in order to allow the troops, or allow the Indian army to inspect what was going on the Chinese side. So rather than removing their infrastructure, the Indian side says China's kept it there and secretly removed this temporary bridge. So on June 15, a group of Indian soldiers came to discuss this with China, and that's when the big skirmish occurred. Now, shortly, quite early into the battle,
A number of Chinese soldiers then reverted back across the river, and this is the sub-zero Galwan River. There's boulders moving, it's very strong flowing, and this is when quite a number of losses have occurred. We've established, yeah. So four soldiers is what the Chinese authorities have been claiming have died during those clashes. This report now puts this number to 42, 38 who've drowned that night, and plus 4 who've earlier been put in record by the Chinese authorities. Are we expecting numbers to go more if we are allowed to dig more? There have been reports that there have been 100 or more Indian reports, and that may well be true. We don't have the information to go that far. We're just saying it's the 38, around the 38 figure. More information may well come to surface, though, of course. And also, you quoted and made it a part of your report that one of the Chinese journalists who wrote about that how Chinese have suffered heavy losses during those clashes was actually sacked. And in fact, he was also interrogated by the Chinese police? Yeah, that's correct. So China came out, which was 8 months after the clash, it's worth noting, on February the 19th, 2020, and it announced its four soldiers that it announced had died, and given them awards, bravery medals. But the very next day, the Chinese government announced that a prominent Chinese journalist had been sacked from his job for stating that was not correct. It wasn't 4, it was many more. So the fact that China's so focused on that, and then it's put out a statement regarding that the following day, it actually included a statement from his employer, which obviously owned or extremely closely connected to the Chinese government, saying he's out on his own. But that's another enormous red flag that there's essentially a cover-up going on, or it appears to be in a large manner. और आइए अब आपको बताते हैं कि गलवान में साल 2020 में हुआ क्या था और कैसे भारत और चीन के बीच गलवान में हिंसक झड़प हुई थी। देखिए, आप समझिए, 2020 में लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भयंकर तनाव था। याद होगा आपको, भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। हालात सुधारने के लिए मीटिंग्स चल रही थी। चीन भारत की बातें मानने के बाद भी पीछे नहीं हटा था। बात बिगड़ती गई और दोनों सेनाओं में झड़प हुई। गलवान में शहीद हुए थे भारत के 20 जवान। भारत के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हुए थे। गलवान में चीन के लगभग 45 सैनिक मारे गए थे। ये हुआ था गलवान में 2020 में। आपको दिखाते हैं वो इलाका गलवान का जहां चीन और भारत के साथ विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है। ये आप देखिए, गलवान, पेंगोंग, तवांग, देपसांग, डोकलाम, बाराहोती, ये वो जगह है जहां पर, यह हमें मार्क किया हुआ देखिए, एरो बना करके लाल लाल आपको दिखा रखा है कि कहां पर तनाव रहता है गलवान में। ये वो इलाका जहां चीन और भारत की सेना लगातार आमने सामने रहती हैं। चीन आए दिन कोई ना कोई नई साजिश रचता रहता है। इस बार चीन ने खेल को लेकर के राजनीति शुरू कर दी है। जी हां, दरअसल चीन ने विंटर ओलंपिक में गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों को मशाल वाहक बनाया है। सैनिक के मशाल वाहक बनाने में कई देश विरोध कर रहे हैं और इस हरकत को शर्मनाक करार दे रहे हैं। इसी बीच भारत ने विंटर ओलंपिक के बायकॉट करने का फैसला किया है। भारतीय राजनयिक विंटर ओलंपिक 2022 की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स भी विंटर ओलंपिक के इन दोनों कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं करेगा। ये फैसला लिया गया है। भारत चीन में विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट करेगा, ओलंपिक की सेरेमनी में शामिल नहीं होगा। भारतीय राजनयिक ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में नहीं जाएंगे। दूरदर्शन पर भी सेरेमनी के प्रसारण पर रोक लगाई गई है। गलवान सैनिकों को मशाल वाहक बनाने पर फैसला चीन पर ओलंपिक के राजनीतिकरण का आरोप भी लगाया गया है कि ये सब राजनीति के चलते चीन ने किया है। चीन ने ओलंपिक में गलवान सैनिक को मशाल वाहक बनाया है। रेजिमेंट कमांडर रहे क्यूई फेबाओ ओलंपिक में मशाल वाहक बने हैं। गलवान में भारत के साथ झड़प में घायल हुआ था क्यूई फेबाओ। चीन के फैसले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। आपको बता दें, चीन पर ओलंपिक का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लग रहा है। चीन के सरकारी अखबार में फेबाओ को हीरो बताया गया था। 4 से 20 फरवरी तक बीजिंग में ये विंटर ओलंपिक होने हैं, जिसका भारत ने बायकॉट किया।